Hello guys, I welcome you all to this platform of Unacademy, CSI Net platform of Unacademy, and myself Himanshu Yadav, and today I am going to take topic on plant tissue culture, which is a topic of plant biotechnology. So I welcome everyone online. So शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा that you need to go to the Google Play Store where you need to go and install the Unacademy's learning app, and after that you need to select your goal. So in the select your goal category you need to select CSI or UGC net. So once you do that you will be getting once you do that, so you will be getting access to various courses from top educators in this particular category, and you can enjoy the courses. You can these courses are available for free, and if you want to go for more, then you need to go for the plus subscription, and the plus subscription will be available for 1 month, 3 months, 6 months, 12 months, and 24 months. Well, I would recommend that each one of you go for 12 months to 24 months of subscription, because 12 months is a good amount of time to clear the exam in one attempt. So you'll be getting 2 chances in a year to clear this exam. And plus to all, so 1 month, 3 months, and 6 months are good for those who can who have already finished the syllabus and they just want to do your revision. So it is good for those. So this is my referral code. Don't forget to use my referral code. My referral code is HY10. So this is my referral code. Just a minute. So this is my referral code. Don't forget to use my referral code is HY10. So you need to enter the referral code over here, and उसके बाद you need to proceed to the payment. So you'll be getting the entire payment for you'll doing entire payment for 12 months. So this is my referral code. So उसके बाद you need to apply this code, and apply करने के बाद you need to proceed to the payment. So you will be getting 10% off. So once you apply this payment, and payment can be done either by debit card or by credit card or by EMI, and these EMI are all no cost EMI. You can also do the payment by net banking. So this is the option. So don't forget to use my referral code. My referral code is HY10. So this is my referral code. So you can आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं किसी भी क्लास को अनलॉक करने में. So this is the referral code that you can use. So this is my profile on Unacademy. So you can follow my profile. So I teach in CSIR UGC NET category. So I have cleared CSIR UGC NET several times, and I have also cleared ARS NET in agriculture biotechnology. And alongside with that, I have cleared GATE biotechnology with top ranks. So something about me. So I have done my MTech at IIT Kharagpur in biotechnology and biochemical engineering. So I have cleared GATE BT with top rank. So you need to be comfortable while you are studying. And guys, please do follow me. Please do follow me over here. So this is the thing. And I've created some special classes on Unacademy. So you can go on Unacademy. You can search my name, Himanshu Yadav. So you will be getting that thing in this particular category. So that is all. So we have started the 45-day GATE crash course, which has started from 21st of December, that is Monday, and we have started the course from 10 a.m. So 10 a.m. पे and 11:30 a.m. पे. So there is a class that is taken by me and Kumkum Gautam ma'am. So Kumkum Gautam ma'am will be taking classes 10 a.m. So we both are sharing life sciences and biotechnology as far as course, and we will teach you. We both will teach you the topics accordingly. The engineering mathematics section in GATE biotechnology paper will be taken by Rahul sir. So Rahul Jain sir will be taking the engineering biotechnology section. So this section will be is taught by me. Then there is a section. Then there is a classes on chemical sciences which is taken by Richa Parikh ma'am. So this is all. So you are over here on Unacademy, and you can crack CSIR with India's largest learning platform. So get your plus subscription and access to unlimited live and recorded courses from India's best educators. So what you will be getting? So you will be getting live classes, you will be getting test series and quizzes, you will be getting doubt clearing sessions.
सो आपको बहुत कुछ मिलता है अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे. And these are the Unacademy top educators, so you have this opportunity to learn with the top educators here on Unacademy. So you'll be getting daily live classes, you will be getting live tests, then you can access the course in a structured manner from anywhere and any particular device. So then this is the referral code, so you can use my referral code. My referral code is HY10, so don't forget to use my referral code. My referral code is HY10. And guys, there is information for all of you that you need to hurry up because a few days are left and price will be hiked from 25th of December. So there will be price hike from 25th of December, so you need to enroll now and get your CSIR UGC net subscription today for the upcoming batches. So this is an important notification. इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा that a complete course for CSIR June 2021 has already been started. And this course will start from 1st January 2021. So you need to stay tuned for more updates. You need to stay tuned for more updates. So there is a course on mathematical sciences which is starting from batch 1. Then there is a course on life sciences batch 1 which is starting from 8th January 2021. So just 1 day is left. So price will be effective from 25th of December itself. So you need to get the CSIR UGC net subscription before 25th of December 2020 to beat the price hike. So if you want to beat the price hike, so you need to get the CSIR UGC net subscription before 25th of December. So जो कोर्स की फ़ीस है वो रिवाइज़ हो रही है. सो 12 मंथ्स का जो सब्सक्रिप्शन है उसकी फ़ीस हो जाएगी अराउंड 15,950. जो 24 मंथ्स का प्रोग्राम है उसकी फ़ीस हो जाएगी 23,200 फ्रॉम 16,000. एंड जो 1 मंथ की फ़ीस है तो दैट विल बी इंक्रीजिंग टू 2,900. सो प्राइसेस आर इंक्रीजिंग. सो दीज आर द करंट प्राइसिंग. सो आपके पास आज का समय है और कल का समय है. सो यू कैन जल्दी जल्दी करिए, देर मत करिए, एंड यू कैन गेट द सब्सक्रिप्शन ऑन द करंट प्राइजेज एंड गेन द बेनिफिट. So get your subscription now. And we will be starting new batches for June 2021. So enroll now before the price is hiked. So this is an important. So we are over here to study plant tissue culture, and plant tissue culture is an important topic of GATE biotechnology. So in plant tissue culture comes under the heading of plant biotechnology. So what is plant tissue culture? फर्स्ट ऑफ ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ प्लांट टिश्यू कल्चर. तो बेसिकली ये कल्चर होता है प्लांट सीड्स का, ऑर्गन्स का, टिश्यूज़ का, सेल्स का या प्रोटोप्लास्ट का ऑन अ न्यूट्रिएंट मीडिया अंडर स्टेराइल कंडीशन. सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर. जब हम लोग कल्चर करते हैं प्लांट सीड्स का, जब हम लोग कल्चर करते हैं प्लांट सीड्स का, ऑर्गन्स का, टिश्यूज़ का, सेल्स का, प्रोटोप्लास्ट का ऑन न्यूट्रिएंट मीडिया अंडर स्टेराइल कंडीशन, so it is known as plant tissue culture. What is the basis for plant tissue culture? Now there are two hormones that affect plant differentiation. So what is the basis for plant tissue culture? ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. So there are two hormones that affect plant differentiation. One is auxin. So auxin will stimulate root development. Then there is cytokinin which stimulates the shoot development. So generally the ratio between these two hormones can determine the plant development. So in case there is auxin increase and cytokine low level of cytokine, high level of auxin, so in that case root development will take place. In another case where there is a high amount of cytokinin and low amount of auxin, so there will be shoot development that will be taking place. अगर auxin और cytokinin का level बराबर है, then क्या होगा, callus development will be taking place. So this is the basis for plant tissue culture, that there are two hormones that affect plant differentiation. One there is auxin which stimulates root development, one there is cytokinin which stimulates shoot development. So generally the ratio between the two hormones can determine the plant development. So जब auxin का concentration ज़्यादा होगा और cytokinin का concentration कम होगा, then there will be root development. जब साइटोकाइनिन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा और ऑक्सिन का कंसंट्रेशन कम होगा, देन देयर विल बी शूट डेवलपमेंट.
जब ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों का कंसंट्रेशन बराबर होगा देन विल बी कैलस डेवलपमेंट. सो दिस इज द बेसिस फॉर प्लांट टिश्यू कल्चर. सो यहाँ पे है कंडीशन जब ऑक्सिजन का कंसंट्रेशन लो हो रहा है, और ये है वो कंडीशन जब साइटोकाइनिन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है. सो दिस इज़ द लीफ स्ट्रिप, एंड ये कंट्रोल है जो इन विट्रो कल्चर में किया जाता है. सो जैसे जैसे हम लोग इस तरफ बढ़ेंगे सो साइटोकाइन कंसंट्रेशन विल बी इंक्रीजिंग, एंड जैसे जैसे वी आर कमिंग डाउन सो ऑक्सिजन कंसंट्रेशन इज इंक्रीजिंग. सो वी आर हैविंग एडवेंटिशियस शूट्स, then we are having then we are having roots, and we are having callus. उसके बाद देर इज इन विट्रो रीजनरेशन ऑफ प्लांट्स थ्रू टिश्यू कल्चर. So there will be some source of tissue explant, then there is explant culture on the agar medium, then there is callus production, and उसके बाद there is plantlet that is regenerated, and then there is plantlet which is transplanted into the sterile soil. सो ये इन विट्रो रीजनरेशन ऑफ प्लांट्स का है थ्रू टिश्यू कल्चर. सो सबसे पहले देर विल बी सोर्स ऑफ एक्सप्लांट, जहाँ से हम लोग एक्सप्लांट लेंगे. फिर एक्सप्लांट को हम लोग अगर मीडियम पे कल्चर करते हैं, जिससे कि एक अनऑर्गेनाइज मास ऑफ सेल्स ग्रो करता है जिसे हम लोग कैलस कहते हैं. सो दिस इज द कैलस प्रोडक्शन. उसके बाद यहाँ से प्लांट रीजनरेट होता है. सो दिस इज द प्लांट रीजनरेटेड स्टेट. उसके बाद प्लांट इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द स्टेराइल सॉइल. सो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर को. सो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इफेक्ट द प्लांट टिश्यू कल्चर. सो फर्स्ट देर इज ग्रोथ मीडिया, जिसमें कि देर आर मिनरल्स, देर आर ग्रोथ फैक्टर्स, देर इज कार्बन सोर्स, देर आर हॉर्मोन्स. देन देर आर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जिसमें कि देर इज लाइट, टेम्परेचर, फोटो पीरियड, स्टेरिलिटी, मीडिया. उसके बाद आता है एक्सप्लांट का सोर्स, जहाँ यूजुअली वी विल बी टेकिंग younger leaves which are less differentiated in the explant category, so that is better for tissue culture. उसके बाद there is genetics, so there are different species which show differences in the amenability to tissue culture. So in many cases different genotypes within a species will have variable responses to tissue culture. So response to somatic embryogenesis has been transferred between melon cultivars through sexual hybridization. So what are the three fundamental abilities of the plant? So plant की three fundamental abilities क्या होती है? There is a property of totipotency. तो टोटिपोटेंसी का क्या मतलब है? सो टोटिपोटेंसी का मतलब है टोटल पोटेंशियल, या जो इनहेरेंट कैपेसिटी होती है प्लांट सेल के पास, जिससे कि वो डेवलप कर जाता है इनटू एंटायर प्लांट सेल इफ suitably stimulated. So it implies that all the information that is necessary for growth and reproduction of the organism is contained in the cell. Then there is de-differentiation, जहाँ पे there is capacity of mature cells to return to meristematic condition, and development of new growing point which is followed by re-differentiation, जहाँ पे there is ability to reorganize into new organ. उसके बाद there is competency. Competency is the endogenous potential of a given cell or tissue to develop in a particular way.
सो ये हिस्ट्री है प्लांट टिश्यू कल्चर की. सो स्लाइडन एंड शॉन ने सबसे पहले बताया था सेलुलर थ्योरी के बारे में कि सेल इज़ ऑटोनॉमस एंड टोटिपोटेंट. उसके बाद हैबरलैंड आया था. हैबरलैंड ने पहला अटेम्प्ट किया था टू डू द प्लांट टिश्यू कल्चर. देन देर वॉज वाइट जिसने कंटिन्यूसली ग्रोइंग कैलस कल्चर का डेवलपमेंट किया. एंड उसके बाद देर वॉज ऑर्गन रीजनरेशन. देन देर वॉज प्लांट फ्रॉम सिंगल सेल. देन देर वॉज प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन विच वॉज डन बाय कॉकिंग इन 1960. उसके बाद देर वॉज मुशरगी एंड शूग, सो जिन्होंने एमएस मीडिया बनाया था. सो दिस वॉज अ पाथ ब्रेकिंग डेवलपमेंट एज फार एज प्लांट टिश्यू कल्चर इज कंसर्न. उसके बाद देर वॉज क्लोनल प्रोपोगेशन ऑफ ऑर्किड. उसके बाद गुहा एंड महेश्वरी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर haploid cultures from the pollen. So in 1981 there is somaclonal variation that was done by Larkin. So ये था हिस्ट्री ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर. सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इन विट्रो कल्चर. सो कल्चर जो होता है इंटैक्ट प्लांट का जिसमें कि सीड एंड सीडलिंग कल्चर है. सो एम्ब्रियो कल्चर में क्या होता है, देयर इज इमेच्योर एम्ब्रियो कल्चर जहाँ पे देर इज़ ऑर्गन कल्चर जिसमें कि देर इज़ शूट टिप कल्चर, देर इज़ रूट कल्चर, देर इज़ लीफ कल्चर जिसमें कि देर इज़ एंथर कल्चर. देन देर इज़ कैलस कल्चर एंड उसके बाद देर इज़ सेल सस्पेंशन कल्चर एंड देन देर इज़ प्रोटोप्लास्ट कल्चर. सो टिश्यू कल्चर के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं. सो व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ टिश्यू कल्चर. सो टिश्यू कल्चर का हेल्प है माइक्रो प्रोपोगेशन में. ये हेल्प करता है टू प्रिजर्व द जर्म प्लाज्म, टू प्रिजर्व द सोमाक्लोनल वेरिएशन it is helpful in dihaploid production. It is helpful in protoplast fusion. It is helpful in secondary metabolite production, and of course it is helpful in genetic engineering. सो माइक्रो प्रोपोगेशन में क्या क्या होता है. सो इन माइक्रो प्रोपोगेशन देर इज एम्ब्रियोजेनेसिस जिसमें कि देर इज डायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस एंड देन देर इज इनडायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस. देर इज ऑर्गेनोजेनेसिस जहाँ पे ऑर्गेनोजेनेसिस है वाया कैलस फॉर्मेशन एंड देर इज डायरेक्ट एडवेंटिशियस ऑर्गन फॉर्मेशन. उसके बाद देर इज माइक्रो कटिंग जहाँ पे मेरिस्टेम एंड शूट टिप कल्चर है. देर इज बड कल्चर. देन कम्स द प्रोसेस ऑफ सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है एम्ब्रियोज का फ्रॉम सोमैटिक सेल दैट आर द नॉन जर्म सेल. सो ये यूजुअली इन्वॉल्व करता है कैलस इंटरमीडिएट स्टेज पे विच कैन रिजल्ट इन वेरिएशन अमंग द सीडलिंग्स. उसके बाद देर इज पीनट सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस. सो देर इज पीनट सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस. सो ओवर हेयर यू आर सीइंग द पीनट सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस जो पीनट से एक्सप्लांट डेवलप हो रहा है. सो ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या होता है कि देर इज प्रोडक्शन ऑफ रूट शूट्स और लीव्स. सो ये ऑर्गन ये अराइज करते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग मेरिस्टेम्स और आउट ऑफ डिफ्रेंशिएटेड सेल्स. सो दिस लाइक एम्ब्रियोजेनेसिस इट मे इन्वॉल्व अ कैलस इंटरमीडिएट but often occurs without the callus also. So this is how the tissue culture is done, and these are the explants that are growing and they are kept in a particular condition in which there is a sufficient amount of they are present in the they are kept in the sterile condition in which there is sufficient amount of light. सो उसके बाद आता है देर इज सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस. सो ये दोनों टेक्नोलॉजीज दे कैन बी यूज्ड इन माइक्रो प्रोपोगेशन. So these are not always desirable because they may not result in the population of identical plants. So the most beneficial use of somatic embryogenesis and organogenesis is the production of whole plants from a single cell. उसके बाद there is micro cutting propagation. So this is a specialized form of organogenesis.
जिसमें कि it involves the production of shoots from existing meristems only. So it requires the breaking of apical dominance. So microcutting can be of three types. There is nodal microcutting, there is shoot culture, then there is clump division. So the art and science of plant multiplication in vitro is known as micropropagation. So ये usually derived होता है from meristems without a callus stage, and it tends to reduce or eliminate the somoclonal variation resulting in true clones. So it can be derived from other explants or callus, but these are often problematic. So steps क्या होते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन के? सो व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ माइक्रो प्रोपोगेशन? सो देर इज स्टेज 0 जिसमें कि देर इज सिलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ द मदर प्लांट. यहाँ पे स्टेरलाइजेशन भी किया जाता है जो कि प्लांट टिश्यू का वी टेक. देन देर इज स्टेज 1 जिसमें कि देर इज इनिशिएशन ऑफ कल्चर. यहाँ पे एक्सप्लांट को प्लेस किया जाता है ग्रोथ मीडिया में. उसके बाद देर इज स्टेज 2 जिसमें कि मल्टीप्लिकेशन होता है, जहाँ पे जो एक्सप्लांट है उसको ट्रांसफर्ड किया जाता है टू अ शूट मीडिया. सो उसके बाद क्या होता है, शूट्स कैन बी कॉन्स्टेंटली डिवाइडेड. देन देर इज स्टेज 3 जिसे रूटिंग कहते हैं, जहाँ पे एक्सप्लांट ट्रांसफर्ड होते हैं टू अ रूट मीडिया. Then there is stage 4 that in which case there is transfer to the soil. So explant is returned to the soil and it is hardened off. So this is the meristem tip culture. So this is the meristem tip culture. So यहाँ पे ये जो रीजन होता है, इस रीजन को एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं और इस रीजन का एक्सीजन कराया दिया जाता है. सो इस मेरिस्टेम का एक्सीजन करा दिया जाता है ऑन द अगर मीडियम. सो प्लांट रीजनरेट हो जाता है फ्रॉम द एक्साइज्ड मेरिस्टेम. सो इन दिस केस विच इज़ हैपनिंग. उसके बाद जो प्लांटलेट होती है उसे ट्रांसफ़र करते हैं स्टेराइल सॉइल में, एंड यू विल बी गेटिंग वायरस फ्री प्लांट ग्रोइंग इन द सॉइल. सो दिस इज़ द कंप्लीट प्लांट दैट हैज़ ग्रोन. सो ये एक्सप्लांट जो हम लोगों ने लिया था ये बेसिकली मेरिस्टेम रीजन होता है. तो वी टेक द मेरिस्टेम टिप कल्चर. सो यहाँ से ले लिया हम लोगों ने. सो एपिकल मेरिस्टेम को हम लोग ने ले लिया, क्लीव किया और इसको एक्सरसाइज करके यहाँ पे रख दिया, जिसकी वजह से देर इज ग्रोथ दैट इज स्टार्टेड. सो फीचर्स क्या होते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन के? सो देर इज क्लोनल रिप्रोडक्शन. सो ये एक मेथड है टू मेंटेन हेट्रोजाइगोसिटी. So then there is multiplication stage जहाँ पे it can be recycled many times to produce an unlimited number of clones. So it is routinely used commercially for many ornamental species. Some vegetatively propagated crops are also used. So it is easy to manipulate production cycles, and it is not limited by field seasons, environmental influences. उसके बाद there are disease free plants that can be also produced, and they has been used to eliminate viruses from the donor plants. उसके बाद there is embryo culture. So in embryo culture is developed from the need to rescue the embryo. So इसे हम लोग embryo rescue भी कहते हैं. So it is ranging from wide crosses where fertilization have occurred but embryo development did not occur. So these techniques have been further developed for the production of plants from embryos developed from non-sexual methods, जिसमें कि there is haploid production as discussed later. So this is the embryo culture. So this is the pro embryo which is dissected 3 to 5 days after pollination. And there is pro embryo which is cultured on solid agar medium. So there is plantlet which is developing from embryo, and there is plantlet which is transplanted into the soil. उसके बाद आता है हैप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन. तो उसके बाद आता है हैप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन, जहाँ पे एम्ब्रियो रेस्क्यू होता है ऑफ इंटरस्पेसिफिक क्रॉसेस. सो देर इज़ क्रिएशन ऑफ एलोप्लॉइड्स. देन देर इज़ बल्बोसम मेथड. उसके बाद देर इज़ एंथर कल्चर एंड माइक्रोस्पोर कल्चर,
जहाँ पे there is culturing of anthers or pollen grains, and it derives a mature plant from a single microspore. So उसके बाद there is ovule culture also, so जहाँ पे culturing होती है of unfertilized ovules जिसे macrospores भी कहते हैं, and sometimes they trick ovules into thinking that it has been fertilized. So this is the bulbosum method. So this was once more efficient than the microspore culture in creating the haploid barley. So now with an improved culture media, microspore culture is more efficient. So ये एंथर से हम लोग ले लेते हैं द हैप्लॉइड प्लांटलेट, और एंथर्स को हम लोग कल्चर करते हैं इन द न्यूट्रिएंट मीडिया, सो उससे एम्ब्रियोइड बनता है, एंड ऑल्सो देर इज कैलस फॉर्मेशन. सो जो हैप्लॉइड प्लांटलेट होती है इट इज़ रीजनरेटेड फ्रॉम द कैलस एज वेल एज फ्रॉम द एम्ब्रियोइड. सो दिस फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एंथर कल्चर. So this is the anther culture, microspore culture, जिसमें कि there is genotype. So as with all tissue culture techniques, there is genotype, then there is growth of mother plants. So it usually requires optimum growing conditions. Then there is a correct stage of pollen development that need to be able to switch pollen development from gametogenesis to embryogenesis. Then there is pre-treatment of anthers, जहाँ पे cold और heat they have both been effective. उसके बाद there is culture media that is additive, जिसमें कि there will be agar versus floating. नेक्स्ट वी कम टू ओव्यूल कल्चर. सो जैसे एंथर कल्चर होता है वैसे ओव्यूल कल्चर भी होता है. सो डिफरेंस इज दैट एन अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो. So this is effective for crops that do not that have not been yet efficient microspore culture system, जिसका microspore for example melon and onion. So what do you do with the haploid? So agar there is weak sterile plant, so usually you want to double the chromosome by creating dihaploid plant with normal growth and fertility. So chromosomes can be doubled by colchicine treatment. So there is colchicine treatment, then there is spontaneous doubling, which tend to occur in all haploids at varying levels. There are many systems that rely on it using visual observation to detect the spontaneous dihaploids, and it can be confirmed by using flow cytometry. So these are the specific examples of DH usage. Then there is a protoplast कल्चर. सो प्रोटोक्लास कल्चर में क्या होता है कि सेल वॉल को डिग्रेड कर देते हैं बाय यूजिंग एंजाइम्स, एंड इट इज़ वेरी फ्रेजाइल एंड इट कांट पिपेट. सो देर इज प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन एंड कल्चर. So protoplasts, they are made up of two species that you want to cross. So there are membranes that are made to fuse, जिसमें कि there is osmotic shock, there is electrical current, and then there is virus, and it is used to regenerate the hybrid fusion product. It contains the genome from both the organisms, so it is very, very difficult. So this is the protoplast fusion. यहाँ पे डिजीज रेजिस्टेंट लीफ प्रोटोप्लास्ट है, यहाँ पे सेल कल्चर प्रोटोप्लास्ट है. सो इन दोनों का हमने प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन किया, एंड प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन किया हम लोग ने पैग और हाई कैल्शियम आयन के कंसंट्रेशन की प्रेजेंस में. तो उसके बाद देर इज एग्लूटिनेशन एंड एडिशन, जिससे कि द प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन विल टेक प्लेस एंड देर विल बी हेट्रोकैरियन फॉर्मेशन. तो देर इज फ्यूजन एंड देर इज माइटोसिस. सो सिन कैरियंस का फॉर्मेशन होगा, देर विल बी फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड्स एज वेल. So these are the two tobacco plant protoplasts which are obtained by digesting away the cell wall. So which are fused to produce a cell that acquires some of the characteristics of both genetic background, and it can be regenerated into a plant with some traits from both parental plants. So what are the uses for protoplast fusion? So basically it combines the two complete genomes. So it is another way of creating allopolypoids. So there is a partial genome transfer जहाँ पे there is exchange of single or few traits between species, and it may or may not require ionizing radiation.
Then there is genetic engineering जिसमें कि there is micro injection, electroporation and which is done by agrobacterium. Then there is transfer of organelles which is a unique method to protoplast fusion. And उसके बाद there is transfer of mitochondria and chloroplast between the species. So this is the possible result of fusion of two genetically different protoplasts. So heterokaryon formation होता है. So this is cell A and this is cell B. So इनका जब fusion कराएंगे हम लोग, so there will be heterokaryon formation, and these are the nucleus. Triangle is represented by mitochondria, and then there is a quadrilateral which is represented by chloroplast. So in some cases there will be hybrid formation, in some cases there will be cybrid formation, in some cases there will be hybrid formation, and in some cases there will be cybrid formation. So what is callus? So when equimolar amount of oxygen and cytokinin are used, they stimulate the cell division. So it leads to mass of proliferation of unorganized mass of cells called callus. So there is a requirement for support which ensures that scale up is limited. So ginseng saponins are successfully produced in this way. Then there is cell suspension culture. So when the callus pieces are agitated in a liquid medium, they tend to break up. So suspensions are much easier to bulk up than callus since there is no manual transfer or solid support. So this is the introduction of callus into the suspension culture. So there is febrile callus which goes into suspension, and उसके बाद there is treatment of 2,4-D. Then there is low cytokinin which is given. Then there is a semi-solid medium. Then there is enzymic digestion with the pectinase, and then there is blending. So उसके बाद क्या होता है? There is removal of large cell aggregates by sieving, and जिसमें कि then there is plating of single cells and small cell aggregates. That is, only viable cell will grow, and it can be reintroduced into the suspension. So this is introduction into the suspension. So this is the initial high density. So there is subculturing and sieving. So sieves, they lump out, and then we plate out to pick up the growing families. So this is the growth kinetics. So initially जैसा कि मैंने बताया, there is a lag phase. So this one is the lag phase. Then there will be a phase of rapid exponential growth which is known as the exponential phase. Then there is linear deacceleration phase in which there is declining nutrients, and then there is stationary phase where the nutrients are exhausted. So there is dry weight, and then there is time t. So there is plant cell suspension which is typical of growth curve. So what are the characteristics of plant cell? So basically they are large and they tend to occur in aggregates. They are shear sensitive, they are slow growing, they are easily contaminated. Then there is low oxygen demand, and it will not tolerate anaerobic condition. So it can grow to higher cell densities and can form viscous solutions. So there are special reactors that are needed for plant cell suspension culture. So one, there is modified stirred tank reactor, then there is airlift reactor, there is the use of air loop reactor, there is bubble column reactor, and then there is rotating drum reactor. So अलग अलग टाइप के रिएक्टर होते हैं, जैसे अलग अलग there is standard Ruston turbine, then there is wing impeller. So this is the airlift system. So this is the rotating drum reactor. So what is the ways to increase the project formation? So you need to be very selective in selecting the species, and then start off with the producing part. Then you later modify the media for growth and product formation, and you feed precursors or feed intermediates. So there will be bioconversion.
and you produce plant like conditions, जैसे कि immobilization is there. So thank you guys, thank you for the session. I hope this session was useful. So this was a general session on plant biotechnology, on plant tissue culture. So guys, let's crack it. So I'll end the session over here. I hope the session was useful. If you have any questions, then you can type the questions in the comment box. So thank you guys.